Hi everyone, good evening. Welcome to Mrs. Eva. Welcome to the Facebook page of Mrs. Eva and YouTube channel of Mrs. Eva. So this is going to be a very important live today. We are going to see the latest updates on Facebook and Instagram. Both of these are very dynamic platforms, and we are going to see. What kind of changes they have introduced in last few months, and how are they impacting us, and what can we do as small businesses to incorporate these changes. So just give me one moment. Please keep joining the live, and please keep tagging your friends. So, and just give me one moment so that I can share this live in the group so that others can join in. Also, we are going live on Instagram. Let me start the live. All right. So, I hope we are live on Instagram as well. All right. Hi, Instagram. So, we are doing this live, and we are today. We are covering the topic, the latest updates on Facebook and Instagram, and how are they impacting small businesses. We are taking up the important marketing updates, and how can we incorporate those changes and um, use those changes in our marketing strategy. All right, great. So please keep saying hi and hello so that I know you guys are here. Okay, so we already have a lot of people joining us. Good evening, everyone. Hello, hi. How are you all doing? कौन कहाँ से join कर रहा है बताते जाओ so that we know. All right, okay. Hi Janelle. Hi Kavita. Hi Samita. Hi Pooja. Hi Shreya. Hi Kaveri. Hi Shweta, hi Harbina, hi Sakshi, hi Neha. Okay, we already have a lot of people. Okay, great. So before I start, let me share with all of you that our moderators are displaying a message to all of you today, that if you share this live in 5 groups and tag your 20 friends, and then send me a WhatsApp to my number, you will get a free guide from me on how can you create never ending social media content. So I'm going to send you guide. That will be a free guide. I'm going to send it to you on your WhatsApp if you share this live in just 5 groups and tag 20 friends. So please keep sharing this live. Please keep tagging your friends, and please help them out as well. All right, great. Now let's start. All right, so hello to our Instagram audience as well. Today we are going live on Instagram after a very long time. Okay, so guys, those of you who have joined us just now, we are going to talk about important updates that Facebook and Instagram have rolled out in past some time. Both of these platforms are very dynamic platforms, and they keep rolling out a lot of updates. And at times I hear a lot of social media experts and a lot of coaches as well say that will tell you how to cheat the algorithm, or will tell you how can you bypass the algorithm, or will tell you how to kind of hi Shruti, will tell you how can you, hi Raki, will tell you how to cheat the system. So I don't think personally that that is the right approach, or that is something that can be done, because companies like Facebook and Instagram, they spend in a lot of money to build up an algorithm, and it is not easy to cheat that program. An algorithm is not a person who you can cheat. It's a program, and the company spends in a lot of money to develop it. You can work along with it. It is, you just need to get an understanding of what is happening, and you just need to work along with it. So today we are going to see what all changes they have introduced, and how can we incorporate those changes in our marketing strategy so that we get maximum visibility, we get maximum reach, we are able to generate maximum business. So this is what we are going to see today. We are starting from Facebook, and then we will move on to Instagram.
Yes, thank you, Janil. Thank you, Kavita ji. Thank you, Rakhi, for displaying this message. You just have to tag 20 friends today, and you just have to share this live in 5 groups and drop me a WhatsApp. I will send you a free guide on how to create never ending social media content. Lot of people face this problem. They think हमें हमें ये नहीं पता हमें क्या content post करना है, हम कैसे content बनाए social media के लिए. तो बहुत ही easy सी, बहुत ही आसान सी guide मैं आपको send करूंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम एक कंटेंट बकेट हम कैसे बनाएं. सो दैट विल बी दैट गाइड इज कॉल्ड कंटेंट बकेट, हाउ टू क्रिएट योर कंटेंट बकेट. सो बहुत ही आसान सा तरीका उसमें मैंने समझाया है आपको कि कैसे आप अपनी कंटेंट बकेट क्रिएट कर सकते हो. सो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप. ऑलराइट, ग्रेट. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फेसबुक से. सो द लेटेस्ट ट्रेंड दैट वी आर सीइंग ऑन फेसबुक, फेसबुक का जो लेटेस्ट ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं. हाय संगीता जी, हाउ आर यू डूइंग? Okay, so one more thing that I wanted to share with all of you is that I can talk both in English and Hindi. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अच्छे से बात कर सकती हूँ. हाय साक्षी, अगर आपको हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिए, जो आप समझ सकते हैं मैं वो लैंग्वेज में आपको समझा दूंगी आराम से. So the first trend that I want to share with all of you is that is becoming increasingly popular is that Facebook. Hi Namrata, how are you doing? Thank you for joining in. Is that Facebook Reels, and this is something that, hi Sugna, this is something that you all, some of you who are doing, Facebook Reels, or who are uploading Facebook Reels, you also must have experienced this, that Facebook Reels are picking up like hotcakes. Facebook Reels जो है वो बहुत अच्छे से पिक हो रही हैं. बहुत जब हम फेसबुक रील्स अपलोड करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ही आप देखोगे कि बहुत अच्छे से बहुत सारे व्यूज उसमें हमें मिल रहे हैं. दे आर अमेजिंग फॉर योर बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी प्रूव हो रही हैं, एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल रही है. सो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब कोई नया फीचर एड ऑन होता है, comparatively Facebook Reels are a new feature as of now on the platform, and this is the new thing. So Facebook Reels are doing very very good, and according to the latest thing that is going on, if you are using incorporating Facebook Reels in your strategy, it is doing wonderfully well. So you have to just be smart, you just have to be a little bit strategic about it. अपना जो प्लान आप बना रहे हो वो ऐसे बनाओ कि आप उसमें Facebook Reels जो है इंक्लूड कर लो. All right, then according to a research, and this is a very important point guys, ध्यान से सुनना. According to a research, more people turn to a brand's social media. More people turn to a brand's social media to get information about it than to their website. So इसका मतलब मैं समझा रही हूँ. So according to a research, this research was conducted and it turned up that लोग जब किसी ब्रांड की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो उसकी वेबसाइट पे ना जाके वो उसका फेसबुक चेक कर रहे होते हैं या वो उसका इंस्टाग्राम चेक कर रहे होते हैं. एंड अ मेजर चंक ऑफ दिस पॉपुलेशन इज जेन जी. सो जेन जी क्या है हमारा? 16 to 24 years. Now what does this mean? This means that social media has become the primary source of information for the brands. Social media, your Facebook page, your Instagram page has become the primary source of the information for your brand. Now any other day this could be a small thing, ठीक है कोई बात नहीं, छोटी सी बात होती, बट अभी के टाइम में what is its importance? अभी के टाइम में आपको क्या लगता है? गिव मी आंसर्स, फटाफट मुझे आंसर बताते जाओ. क्यों आपको लग रहा है कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस बात के बारे में? व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज सच एन एक्साइटिंग थिंग? ये बताओ, ये सोचो, व्हाई इज दिस सच एन इम्पोर्टेंट थिंग? हाय मुबीना, हाउ आर यू? Why is it such a thing that we should be so excited about it, we should be so pumped up about it? Because the reason is, I'm waiting for your answers guys, I'm waiting for your answers, I'm waiting for you to guess why should we be so pumped up about this information, that social media has become the primary source of information for any brand, and especially with Gen Z होता है हमारा 16 से 24 साल के बच्चे कह लो, लोग कह लो, एडल्ट्स कह लो. Yes, exactly, Kavita ji. We get more visibility because of this. हम small businesses,
हम लोग वेबसाइट्स एक तो नहीं बना रहे हैं, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बिजनेसेस जो हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस से रन कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिगर ब्रांड्स, मैं बड़े ब्रांड्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं। हमारे लिए दिस इज एन अमेजिंग न्यूज कि कोई भी लोग जो है, लोग people are making social media as their primary source of information, which means if anybody hears about us, if anybody hears about any information, any brand, किसी के बारे में भी कोई जानना चाह रहा है, तो वो सोशल मीडिया पे आ रहा है। वेबसाइट हैज बिकम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स इवन इफ आई डोंट हैव एन वेब इवन इफ आई डोंट हैव अ वेबसाइट, आई एम स्टिल इन द गेम। मैं अभी भी मार्केट में हूं, मैं अभी भी गेम में हूं। आई डोंट हैव टू वरी। देयर वाज अ टाइम जब ये कहते थे कि वेबसाइट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंड, अब वो टाइम नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया मेंटेन कर रहे हो, आप फेसबुक पे हो, आप इंस्टाग्राम पे हो, आप गेम में हो, आप डटे हुए हो, आप बड़े से बड़े ब्रांड को टक्कर दे सकते हो, छोटे से छोटे ब्रांड को टक्कर दे सकते हो, राइट? सो कोई भी एज ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एज ग्रुप हो, कुछ भी हो। अभी मैं दूसरे एज ग्रुप पे भी आऊंगी, दूसरी रिसर्च भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए। सो you have to understand that this is such a big and new and amazing news। एक बहुत बड़ी पावर हमारे हाथ में आ गई है। This is one of the reasons why small businesses like me, why a small business like you is able to succeed। and इस point को note करके रख लो that if we are if we are taking care of our social media channels, there is no power, there is no power in the world that can defeat us, right? So if we are playing our cards right, हम अपनी strategy ठीक से बना रहे हैं, हम consistency के साथ हम काम कर रहे हैं, हम अगर ठीक से हम काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया चैनल्स मेंटेन कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं नहीं कह रही हूँ लिंक्डइन पे जाओ, मैं नहीं कह रही हूँ ट्विटर देखो, मैं नहीं कह रही हूँ आप पिंटरेस्ट पे जाओ, सिर्फ आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ध्यान दे लो, you will be able to still generate a lot of leads that can mount to conversions. So this point is very, very important for all of us, right? I'm going to give you one moment to let this news sink in. This is a huge thing for all of us. So कोई अपने आप को कम नहीं सोचेगा, कोई ये नहीं सोचेगा that we are just small businesses, हम तो household run business हैं, हम ये हैं वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी है। Social media has given us this power, we can become household names। ओवरनाइट हम वायरल जाने की ताकत रखते हैं और हम वो करेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ओके, एक और this is one more thing that I wanted to share with all of you. Hi Monica ji, how are you doing? So one more thing that I wanted to share with all of you is that why is this thing important? क्यों ये चीज important है, क्यों ये अपडेट हमारे लिए इतना important है? The reason is that this Gen Z, जो ये हमारी Gen Z है, the purchasing power and the decision making power that they have in their hand, this is increasing day by day। So इनके हाथ में जो परचेजिंग पावर है और जो ये डिसीजन मेकिंग पावर है, ये आप देखोगे डे बाय डे बढ़ रही है। हम व्हेन वी वर किड्स, जब मैं कहूँ कि मैं 16 साल की एज में थी, वी डिड नॉट हैव एज मच पावर इन आवर हैंड्स। हम लोग इतने सारे डिसीजन नहीं ले लेते थे। बट आज के टाइम में अगर 16 साल का बच्चा है, या if we have a teen, 18 साल के अगर है, they have a lot more decision making power, they have a lot more, in fact, purchasing power in their hands। And if we want to tap this audience, अगर आप इस if you are there in this demographic, अगर आप इस audience को tap करना चाहते हो, तो you can easily do that। You can easily do that by keeping your social media active। Yes, kids are very much bold, they are, times are changing, they can make decision instantly। If they like a service, they're going to opt for you। If they like a product, they can make instant purchases। What you have to do is, if you want to tap this audience, you have to keep your social media active, you have to keep them engaged, you have to keep yourself updated, अपना channels updated रखो, engaged उनको रखो, visibility अपनी बना के रखो। So this is also another very good news that is there for all of us।
Thank you, Kavita ji, for reminding that you have to share this live in 5 groups and tag 20 friends, and just send me a WhatsApp, and I will send you a free guide on how to create never-ending social media content. Okay. Yes. Now, the third point is that there is an increase in Facebook shopping and through Facebook lives. This is something that I want all of you to understand, that lives, Facebook lives, are number 2 most appealing feature for audiences after stories. So this is another trend that has come up, that Facebook lives have become number 2 most appealing feature after Facebook stories. Facebook stories so definitely sub number 1 पे है, because again माइक्रो कंटेंट कॉन्सेप्ट है, तो बहुत जल्दी कंज्यूम होता है, एंड एवरीबडी जस्ट कंज्यूम्स फेसबुक स्टोरीज लाइक एनीथिंग. बट लाइव्स हैव बिकम नंबर टू मोस्ट अपीलिंग कंटेंट का जो आप जिसको कहते हो फीचर बन गया है. Plus, there is an increase in Facebook shopping, and that increase has come through Facebook Lives. And this, everybody, all of you have experienced this. You guys have experienced this through Facebook Lives yourself. अगर आप देखो तो ये trend, this has increased through pandemic, and it is now increasing also. You see a lot of people doing Facebook Lives. आप खुद ये चीज experience कर रहे हो. Thank you so much, Pooja. Guys, please keep sharing and tagging your friends. This is something that can really help everybody. ये information सबको बहुत help करेगा. I think you guys can also appreciate that this information is very helpful for all small entrepreneurs. हम सब के लिए ये बहुत helpful है. Okay. Now, I'm moving on to the next point, which is again, ये बहुत important point है, guys. So anybody who is into content creation, उनके लिए ये बहुत important point है. More and more people, ध्यान से सुनना, more and more people are turning to Facebook. More and more people are turning to Facebook to learn social skills than going to schools or universities, which is an amazing news for coaches, content creators, or teachers, subject matter experts. So basically, इसका मतलब क्या हुआ, that people are focusing on learning. So people are increasingly understanding that they do not necessarily want to go back to schools and universities, or वो पहले के टाइम में होता था that we want to, or we go to we used to go back to university, जाके हम पता करते थे कि ओपन यूनिवर्सिटीज पता करते थे क्या कोर्सेज अवेलेबल है, क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं. People are turning to Facebook to find out what all courses are available, क्या वो सीख सकते हैं, क्या वो जान सकते हैं, क्या कोर्सेज वो टेकअप कर सकते हैं. अब चाहे वो लाइफ स्किल्स हो, चाहे वो सोशल स्किल्स हो, चाहे कुकिंग स्किल्स हो, चाहे वो किसी भी टाइप के कोर्सेज हो. So this is an amazing news for content creators, for subject matter experts. आप कोच हो किसी भी तरीके के, this is an amazing news, guys. So ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको हम कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है, ये this is amazing, right? This is amazing. So this is a great news for all of us. हम सब के लिए ये एक amazing news है that people have stopped running after names, bigger universities, and जो एक उसके पीछे भागते थे कि चलो हमें नाम मिल जाएगा, सर्टिफिकेट यहाँ का मिल जाएगा. People want practical knowledge. Which they are getting from coaches like us, content creators like us. Practical जो एक knowledge है वो उसको value कर रहे हैं. So this is another very important point that you guys have to keep in mind. And again, I really want to encourage everybody. I come across a lot of women who think कि मैं क्या कर सकती हूँ, हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता, we want to do something. Everybody is equipped with one or the other skill. सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कुछ भी आता है उसको सिखाना शुरू करो. Use your knowledge, guys. सिखाना शुरू करो बस. Okay.
All right, another very important study, another very important update that I saw was that according to another research, Facebook is the favorite platform of 30 to 44-year-old demographic. So, yeah, I think a lot of us have experienced this, but this is one study that I, read, and I thought that this is very important to put it out here, that Facebook is the favorite social media platform for 30 to 44 year old demographic. So ये demographic अगर आप cover कर रहे हो, so be very active on Facebook. And इन लोगों के ये वाला age group है, they are very comfortable on Facebook because for them they started on Facebook first. Facebook से फेसबुक से अगर आप स्टार्ट कर, ये जो डेमोग्राफिक है इन्होंने फेसबुक से स्टार्ट किया है, एंड दे काइंड ऑफ वांट टू बी, दे आर वेरी कंफर्टेबल. सो इनके लिए क्या है ना, फेसबुक पे ये दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड दे आर वेरी दिस थिंग कि हाँ मुझे फेसबुक आता है, एंड यू हैव मोर चांसेस ऑफ कन्वर्जन ऑन फेसबुक इस डेमोग्राफिक में. So this was one study that I wanted to share with you. Another update, yes, so little younger ones, अगर आप थोड़ा सा छोटा younger अगर आप उसमें demographic में आओगे श्रेया, so they are more active on Insta. वो थोड़ा Insta पे आपको ज्यादा मिलेंगे, but जो ये वाला demographic है, they are very active, even though अब ये वाला जो demographic है, even they are getting very active on Insta and they want to kind of learn. So aspirational value यहाँ पे play कर रही है. They kind of want to get active on Instagram, but still they are very very comfortable on Facebook. And इसीलिए I keep on telling everybody that even though all of you want to learn Instagram and you get active on Instagram, never ever kind of just leave Facebook out from your marketing strategy. जो I see a lot of people, what they are doing is, किसी ने कह दिया, social media strategist ने कह दिया कि नहीं छोड़ दो Facebook, छोड़ दो, सीधा Instagram पे चले जाओ. वो बहुत बड़ी mistake कर रहे हैं वो लोग, those who are completely leaving out Facebook and shifting to Instagram, because again you are taking care of another, you're building on another platform, और आप एक established platform को zero करके नए प्लेटफॉर्म पे एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म जो कि अभी आपने एस्टैब्लिश नहीं किया है, आप उस पे जा रहे हो फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म, उसको जीरो करना इज नॉट एट ऑल राइट. बिल्कुल भी वो चीज ठीक नहीं है. सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, नहीं करना ये गलती कि आप फेसबुक को जीरो कर दो, बिल्कुल भी नहीं. डू नॉट डू इट. आई बीन टेलिंग एवरीबडी, आई बीन टेलिंग दिस टू एवरीबडी. कोई भी कह दे, इवन इफ यू हैव आउटसोर्स्ड योर सोशल मीडिया, डू नॉट स्टॉप योर फेसबुक मार्केटिंग. बहुत ही गलत ये एडवाइस आई एम सीइंग पीपल आर गिविंग आउट टू पीपल. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपडेट है दैट आई गॉट. Okay, Raki saying my son says, "Mama, आपके followers Instagram पर हमसे ज़्यादा है, तो आप हमसे ज़्यादा जानते हो." Great, Raki. Okay, so this is another update that I wanted to share with all of you, that people love micro content, yes, which is why about 50% of consumers are discovering products through stories. So micro content, guys, always it is going to resonate. People don't want to watch बहुत लंबी live sessions. People don't want to watch a lot of very lengthy videos. So that is why stories resonate, reels और stories का success होने का reason ही यही है, because they are micro content format. So people love micro content, which is again going to be successful in future also. So people love micro content, which is why about 50% of consumers are discovering products through stories. Now you can see how you would want to incorporate stories and reels in your marketing strategy. Once again, आप कैसे करना चाहते हो ये आप देख सकते हो. Then another point, which is of course very very important, and all of us are experiencing it ourselves, that Facebook groups are playing major role, and they will play again major role in growing small businesses, especially when women are your TG. So TG अगर आपका women है, TG is target group. So if women are your target group, then Facebook groups, they are playing a major role in your business growth. But yes, choose your groups very very wisely. I always say this कि बहुत सारे लोग groups hopping करते हैं, या बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रुप्स में एक्टिव होने की कोशिश करते हैं. That will never amount to anything. अगर आप वो करोगे
तो कहीं से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड देन यू विल कम बैक एंड कंप्लेन कि हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है. Okay, then another update that I have for you guys is for audience between 25 to 48 years. For Facebook is the first choice for live videos. So live videos की first choice है Facebook for audience between 25 to 48 years, which is again a very very huge news, guys. So if the audience is between 25 to 48 years, Facebook is the first choice for live videos. Okay, now next update that I have for all of you is, hi Meenakshi, engagement based posts, which we always keep talking. हमेशा हम यही बात करते हैं that engagement based posts are working well for Facebook. Being salesy again is not working. Platform again is, जैसे Instagram change हो रहा है वैसे ही Facebook भी change हो रहा है. Engagement based posts are working well for Facebook also. Being salesy is not working. जहां जैसे ही आप सिर्फ सेल्स पोस्ट पुश करते रहते हो, वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती जाती है. विदाउट यू इवन रियलाइजिंग, you will not get or you will stop getting traction. The moment you start including engagement based posts in your marketing plan, वैसे ही आपको ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा मिलने लगता है. एंड बाय ट्रैक्शन आई मीन ऑर्गेनिक ट्रैक्शन. ओके, another update that I have for you, and this is the last update for Facebook, more and more people are investing in Facebook ads. So Facebook ads में boost post feature जिसकी हम बात करते हैं, a lot of people are investing in that. But again, that feature is going to work for you once you start getting organic traction. So organic traction मिलना भी बहुत important है. And of course, next week we are releasing another workshop on Facebook and Instagram ads both. दोनों ही हम सीखेंगे कि Facebook boost post feature कैसे use करते हैं और Instagram ads feature हम कैसे use करते हैं. Okay, so these were the updates from Facebook. Hi Manjeet, how are you? So these were the features from Facebook, updates from Facebook. Now we are coming on to Instagram. Now we are coming to Instagram. Instagram के क्या updates हैं, क्या feature updates हैं, या क्या हमको Instagram से related करना चाहिए? Now we are going to talk about that. Before moving on to Instagram, let me once again remind you that if you share this live in 5 groups, tag 20 friends, send me a WhatsApp, I will share with you a free guide on how to create never-ending social media content, which is the pain point for most people. उनको यही समझ नहीं आता है कि क्या content हमें share करना है अपने social media पे. Alright, चलिए शुरू करते हैं. Okay, so okay. So, and one of the features that I find is very, very helpful for, Instagram, and I have also started using, thank you, Pooja, I have also started using this feature is that now you can give your links in Instagram stories. So, आप Instagram story अगर create कर रहे हो, so उसमें आप link जरूर डालो, because this is, you can direct your audience. आप Instagram से audience direct कर सकते हो उस link पे. This is this is very very helpful for small businesses like us. आप कोई campaign run कर रहे हो, आप कहीं पे audience को direct करना चाहते हो, so this is very very helpful feature. A lot of people are already using this feature. If you are already using, then well and good, but if you're not using this feature, then you can you can just absolutely start using this feature. इसको फटाफट से use करना start कर दो. You can give your links in Insta stories. Okay, then again, moving ahead, still authentic and candid content works on Instagram. Engaging content works best. ये जितनों ने भी Instagram challenge लिया था, Facebook challenge लिया था, they have seen the performance that the engaging content, हमने बिल्कुल कोई salesy post नहीं डाला, हमने marketing post नहीं डाला, still a lot of us got such good response, such good हमको इतना अच्छा response मिला Instagram का भी और Facebook का भी. We were just being ourselves, guys. We were just being ourselves. Sorry, just again. Sorry. So we were sharing
we were sharing engaging content, we were sharing what we you know we were sharing content where audience could engage with us, they could respond to us, they could talk to us more. So that is the kind of content that gave us response, that gave us more and more engagement, and that is what we wanted for Instagram, and that is what the platform was favoring, and that is what the platform will favor moving ahead also. So this is one of the major updates from Instagram, that moving ahead also Instagram is going to favor the authentic, candid, and engaging content. Okay, then next thing is that Insta Live, again, once again, I'm going to suggest to all of you that try to include Insta Live in your marketing strategy, because this is again important. If it will be impactful if you could include one Insta Live at least in your marketing strategy. Okay, then very important update from Instagram. Those who have attended, or those who have done the Instagram challenge, they know about this update, because this is one of the very, or rather the most important updates of Instagram until now. The return of the chronological feed and the favorite feed by Instagram, बहुत important update है guys, इसको बहुत ध्यान से सुनना. So now the Instagram has rolled out the update where they have given this option of chronological feed and the favorite feed for the users, which means that people can decide on their own whose post they want to see, either higher up as in the favorite, or in the chronological order. So chronological order is जिस order में वो post हुआ है. ओके, अब नाउ यू कैन से कि यार हमें क्या फर्क पड़ता है इससे, तो मैं आपको ये समझा दूं, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स probably until now that Instagram has rolled out. Basically it means that you are giving back the power of what to see in the hands of the user. सो बेसिकली अगर मुझे आपका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, या मुझे किसी का कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं उसको फेवरेट मार्क कर सकती हूँ. सो मुझे अगर पूजा का कंटेंट पसंद आ रहा है, मुझे कविता जी का कंटेंट पसंद आ रहा है, मुझे राखी का कंटेंट पसंद आ रहा है, मुझे सुरभि का कंटेंट पसंद आ रहा है, मुझे श्रेया का कंटेंट पसंद आ रहा है, मुझे प्रियंका का कंटेंट पसंद आ रहा है, मैं उनको फेवरेट मार्क करती चली गई. उसके अलावा मुझे जितने भी लोग हैं, मुझे उनका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, सो दैट मीन्स मेरे पास मैं उनका कंटेंट देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फीड जो है वो फेवरेट फीड जो है वो सेट कर लिया. आई एम वॉचिंग माई फीड एज फेवरेट फीड. मैं इंस्टाग्राम में ओपन किया एंड आई एम सीइंग द फेवरेट फीड, व्हिच मींस आई हैव एसेंशियली नॉट फॉलोड यू, अनफॉलोड यू. मैंने आपको अनफॉलो नहीं किया है, लेकिन मैं आपके अपडेट्स भी नहीं देख रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर पोस्टिंग. नाउ हाउ इज इट इम्पैक्टिंग यू? आप कुछ भी डालते रहो, आई एम नॉट सीइंग योर फीड. आप सेल पोस्ट डाल रहे हो, आप ऐसी पोस्ट डाल रहे हो जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, या मेरे मतलब की है या नहीं है, आई एम नॉट सीइंग दैट post at all. So this is very important, and it becomes extremely pivotal कि आप वो content share करो that interests your followers. Unless your followers are interested in your content, they are interacting with your content, they are not going to engage with your content. और अगर आपको वो content के साथ engage नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा. आप कुछ भी डालते रहो, वो आप उनके फीड में नहीं आ रहे हो. सो ये समझो कि जो यूजर है, या जो आपका फॉलोअर है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी पावर आ गई है कि क्या वो आपका कंटेंट देखना चाह रहा है, या वो आपका कंटेंट नहीं देखना चाह रहा है. अब क्रोनोलॉजिकल फीड भी अगर वो देख रहा है, तो ये भी समझो कि there are everybody follows a lot of people on Instagram. So Instagram पे बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत से लोगों को फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो हम बहुत से लोगों को फॉलो कर रहे हैं, एंड बहुत इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जरूरी नहीं है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन या जो हमारा पोस्ट है वो उसमें क्रोनोलॉजिकल फीड में जब
यूजर देख रहा है वो उसी टाइम उसको दिख जाए। मैं अभी एड्रेस करती हूँ वेदर दिस इज गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और बैड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं अभी उस पे भी आती हूँ। So we have to make sure that the content that we are sharing is good content. So how is it? A lot of people are saying, I'm seeing comments that this is not good piece of information. This is an amazing बहुत ही अच्छा अपडेट है। रादर मैं आपको इसकी फ्लिप साइड बताती हूँ। द फ्लिप साइड टू दिस इज दैट क्या होता था अभी तक, हम स्मॉल बिजनेसेस, हमारा जो कंटेंट है वो फीड में आता ही नहीं था। हम सब ये कंप्लेन करते थे कि हम इतने अपडेट्स देते हैं या हम जो भी शेयर करते हैं वो लोगों तक पहुंचता नहीं है, हमारे फॉलोअर्स तक पहुंचता नहीं है। नाउ दिस पावर दैट हैज बीन गिवन बैक टू पीपल, अब हमारा जो कंटेंट है, बिकॉज वी आर शेयरिंग, वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम engaging content share करें, and when people will start engaging with the content that we share, हमारा content लोगों को organically दिखना start हो जाएगा। This is why this is such a good piece of information. This is why this is such a good news for people and content creators like us. हमारे लिए ये बहुत अच्छी न्यूज इसलिए है क्योंकि अभी तक जो बड़े ब्रांड्स होते थे, बिगर ब्रांड्स एंड बिगर कंटेंट क्रिएटर्स जिनके पास मिलियंस में फॉलोअर्स होते थे, सिर्फ उनका ही कंटेंट पुश होता रहता था, हमारा कंटेंट नहीं पुश होता था। बट इस फीचर से, इस अपडेट से, इफ समवन हु हैज मेरा अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और आपने मुझे फेवरेट मार्क कर लिया है, तो मेरा कंटेंट मेरे फॉलोअर को दिखेगा। पहले ये फैसिलिटी जो थी वो नहीं अवेलेबल थी। सो अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज अ ग्रेट पीस ऑफ न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी न्यूज है। मैं आपको इसीलिए इसकी फ्लिप साइड बता रही हूँ कि ये मत सोचना दैट दिस इज बैड न्यूज, दिस इज रादर एन अमेजिंग न्यूज। वी वर लॉन्गिंग फॉर दिस, वेट कर रहे थे हम इसको, हम इस न्यूज का वेट कर रहे थे कि कब ये इंस्टाग्राम ये पावर कब वापस देगा यूजर को, कब ये न्यूज वापस मिलेगी कि ये पावर वापस आ गई है यूजर के हैंड में। व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं वो ऑसम वाला कंटेंट आ जाए हमारे हाथ में, या हम वो ऐसा कंटेंट डेवलप करते हैं कि हम कनेक्ट कर जाए। और ये जो कनेक्शन की पावर है ये आप में और मेरे पास ज्यादा है क्योंकि हम ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करते हैं। ब्रांड्स जो है वो बहुत बहुत एक एक बिगर पिक्चर वो लेके चलते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ऑडियंस है। इमेजिन करो एक बड़ा ब्रांड, दे हैव 10 मिलियन पीपल टू केटर टू, 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके पास, उनको वो ऑडियंस केटर करनी है। आपके पास और मेरे पास मैक्स टू मैक्स 4 या 5,000 लोग हैं, ऑडियंस हैं, जिसमें से कि हमारे साथ एक टाइम में इंटरैक्ट 1,000 या 2,000 लोग कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत छोटी सी ऑडियंस है और उनके लिए कंटेंट बनाना इज मच इजियर एज कंपेयर टू 10 मिलियन लोगों के लिए कंटेंट बनाना, राइट? सो अंडरस्टैंड कि हमारे पास इस टाइम पावर ज्यादा है। So don't think that this is a bad piece of information or bad news for us. It is rather an awesome news और बहुत पंप अप होना चाहिए इस टाइम सबको कि यार यस ये पावर तो वापस मिल गई है हमको और इसका बेस्ट यूज हम लोग कर ले एंड get the attention that we need। वो हमारे हाथ से जो एक चीज चली गई थी इतने सालों तक हमारे पास नहीं थी कि हमारा कंटेंट ही नहीं पुश होता था, वो कंटेंट हमारा पुश होना स्टार्ट हो जाएगा अब, एंड पीपल विल बी एबल टू एक्चुअली सी हमारा कंटेंट, लोग देखने लग जाएंगे, वो सामने स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। इतनी मेहनत वी यूज्ड टू वर्क सो हार्ड कि यार ये बनाया, रील बनाया, पोस्ट बनाया और पता चलता था कि नहीं देख पा रहे हैं लोग, हमारा कंटेंट ही नहीं पहुंच पा रहा। सो दैट इज व्हाई इट इज एन अमेजिंग पीस ऑफ न्यूज। Are you guys is it clear to all of you? सबको समझ में आया why is this good news? Bad news नहीं है ये। Do you guys know, understand now? किस को लग रहा था bad news? तोरल का नाम मुझे याद है, and then there were some other people who followed कि अरे यार ये तो bad news हो गया। Tell me, is it clear to all of you why this is such a good piece of news for all of us? Tell me, किस को लग रहा था bad news है and end of the day you guys realize now that this is an awesome news है? समझ में आ गया? Clear everybody that this is an amazing news for us? Okay, all right, आगे चलते हैं। All right, okay, then again reels are still growing on Instagram. Some people think that reels have completely stopped growing. ऐसा नहीं है। reels have not stopped growing, ऐसा नहीं हुआ है। reels are still an amazing way to grow, but again you just have to plan कर लो accordingly इसको, and reels are still growing.
Then another way for growth on Instagram is look for influencers. You can also look for micro or rather nano influencers. So nano influencers कौन से होते हैं? People who have or influencers who have less than जिनके पास less than 10,000 followers होते हैं Instagram पे. They are nano influencers. So look for influencers who can smartly promote your product. सो आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने हैं जो कि स्मार्टली आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट कर सके. डोंट गो विथ सूडो इन्फ्लुएंसर या वो जो मशरूम टाइप इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत सारे आ गए हैं. दोज हु हैव नो विजन एट ऑल. सिर्फ उनके पास फॉलोअर्स तो हैं बट नो प्लान नो विजन. कोई विजन नहीं है उनके पास, कोई प्लान नहीं होता आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने का या सर्विस प्रमोट करने का. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि who are you connecting with. कौन है वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर या नैनो इन्फ्लुएंसर who you want to promote your product. आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. टॉक टू द इन्फ्लुएंसर, मेक अ प्लान विद देम. उनसे बात करो, प्लान उनके साथ मिलके बनाओ एंड सी कि आप कैसे स्टेजेस में. वो एक ना स्टेज होती है, मार्केटिंग एक प्लान बनता है. सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो बहुत अंडररेटेड है. सो यू हैव टू टॉक टू देम एंड एक प्लान पूरा बनाना पड़ता है आपको एंड देन यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट. जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो काम तब नहीं करती जब यू कनेक्ट विद अ सूडो इन्फ्लुएंसर जिनको कोई आइडिया नहीं होता है कि हाउ टू मार्केट अ प्रोडक्ट और सर्विस इफेक्टिवली. सो जो ये दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि जो मशरूम टाइप इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं जिनको नहीं पता होता है, जो दोज हु डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इंडस्ट्री, उनसे अगर आप प्रमोट कराओगे सो तब तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है. भावना इज आस्किंग, और बहुत सही क्वेश्चन है भावना का, कि इन्फ्लुएंसर आस्क फॉर फ्रीबीज, इज इट ओके टू गो हेड विद दिस. सो अगेन मेरा आंसर यही है भावना कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो इन्फ्लुएंसर को अगर आप फ्रीबी दे रहे हो तो क्या वो वर्थ इट है, क्या उसके पास प्लान है कि आपका प्रोडक्ट कैसे वो प्रमोट करेगा या करेगी. सो वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कंप्लीट उसके पास स्टेजेस में एक प्लान होना चाहिए कि वो that person must be able to do justice. बहुत लोग सोचते हैं कि हम instead of paying we can give freebies to the influencer to promote the product, क्योंकि जो experienced influencer होगा, that person is going to put in a lot of effort and planning to promote your product. जिसके पास कोई प्लान नहीं होगा, जिसके पास कोई विजन नहीं होगा, कोई जिसके पास फोकस नहीं होगा, वो यही बोलेगा बस फ्री मेरे को ये आप प्रोडक्ट भेज दो, मैं आपके लिए 2 पोस्ट बना दूंगी या 3 पोस्ट बना दूंगी. दैट इज नॉट हाउ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स. उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, उससे कोई आपको विजिबिलिटी भी नहीं मिलती, लीड्स भी जनरेट नहीं होती. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि कैसे उनसे आपको बात करनी है, आपको एक पूरा प्लान उनके साथ डेवलप करना है. ओके, दिस वाज द 6th पॉइंट अंडर इंस्टाग्राम. नेक्स्ट अपडेट दैट इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट यू नीड टू फोकस, और आई थिंक ये हम बहुत टाइम से बात भी करते आ रहे हैं, दैट यू नीड टू फोकस ऑन यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट. So platform also favors when your audience start creating content for you or they start engaging with you. So हमने कई सारी exercises when we were doing Instagram challenge and Facebook challenge, हमने कई सारी posts ऐसे करी थी जिसमें हम user को encourage करते थे to do a posting for us or to share for us or to share their experiences with us. So they are user generated, that becomes user generated content for us. अब इससे बेनिफिट क्या होता है? एक तो यूजर आपके बिहाफ पे कंटेंट बना रहा है, आपकी मेहनत कम लगती है. देन अगेन they are either using your hashtags, आपके हैशटैग यूज कर रहे हैं, आपको टैग कर रहे हैं, या आपको आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, उनके सर्कल में आपके बारे में पता चल रहा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग बेनिफिट. प्लस ये हो रहा है कि प्लेटफॉर्म ऑल्सो स्टार्ट्स टू गेट प्लेटफॉर्म गेट्स टू नो दैट यू आर बीइंग टॉक्ड अबाउट. सो ऑटोमेटिकली आपको जो विजिबिलिटी है वो प्लेटफॉर्म ज्यादा देना स्टार्ट कर देता है. सो फोकस ऑन यूजर जनरेटेड कंटेंट. ओके, then another important point is that platform focuses and favors cause marketing. Cause marketing, if you are working towards a cause and highlighting it and sharing it, that also gets a good traction, right? So
you have to understand that after pandemic happened, cause marketing became a very very big thing. I know her this is not possible for everybody, सबके लिए शायद ये possible नहीं है करना, but for those who are doing it, this is one of the most important things, and one of the things that are that is kind of giving traction. So this is called cause marketing. You're working for a cause, you're working towards a cause, and then you're highlighting it and sharing it, and this gives you good traction because people start to kind of what do you call it, people start to recognize you, people start to it kind of gives them a feel of community ki okay ye I am also working towards this cause and they are also working towards this cause. So एक ऐसा feeling आता है कि we realize this, and we kind of understand that okay, she is also working towards the same cause. You feel that this is, we are one, we belong to one community. So this also helps a lot. So if you're working towards some cause, you can kind of try to share it on Instagram and work towards it, and share it with your audience as well. Okay, then next update that I have for you is that in Instagram increasingly is becoming an e-commerce platform, which means that people come here and shop as well. So Instagram is no more just a catalog platform. ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ आ रहे हैं यहाँ पे और सिर्फ आपकी फोटोज देख के एग्जिट कर रहे हैं. It has become an e-commerce platform, and it people come here and shop as well. What you need to do is you need to work on your strategy, and soon you will be able to achieve what you have, like what you desire for. So we have a lot of women in our group in Mrs. Diva itself. We have a lot of women who are generating business from their Instagram as well. So there are a lot of examples within our community, and you can also kind of get those desired results. You just have to be consistent, you have to work on your strategy, and you will also be able to achieve those desired results. So this was update number 9 for you for Instagram. Okay. Yes, another update, I'm pretty sure most of you would have seen this, that Instagram's reel length is now 60 seconds. So a lot of people felt that they kind of wanted to talk more in one single reel, and 30 seconds were very less for them. So they now have the option of 60 seconds. So this was a very very important and very very helpful update that they have now, that they can in one go they can make 60 seconds reel. So this was another thing that I wanted to just put it out here. Those who are already making reels, they are already aware of this feature. Okay, another important update is that you can now schedule your live. So this live that I'm doing on Instagram right now, this was scheduled by me already in the afternoon. You can schedule your live and it will be displayed on your profile. Your followers and your audience, they can also set a reminder. So this is like another feature, that whenever you get time, you schedule your live on your profile, and your followers and audience, they will see it in advance. So they'll know ki, okay, she's coming live at this point in time, and I will set my reminder, and they will be reminded of that this person will be live at this time. So this is another very good feature. Another feature that I want all of you to try is let Facebook recommend your reel feature. So a lot of people are not using this feature. Do not do not kind of just hi Richa, no problem, that's okay. So try to use this feature when you are uploading your reels on Instagram. It gives you the option of let Facebook recommend your reel. So try to use this feature. So what this means is simply that Instagram will recommend your reel on Facebook as well. So this is a good feature, and I feel that most of you should just go ahead and give this a try, because I whenever I upload my reel, I use this feature, and this is a good feature. So this also gives you visibility on Instagram because you're uploading on Instagram, and this also gives you visibility on Facebook. Kavita ji has used it. Yes. So this is a good feature. I'm pretty sure some of you must be using it, but if you are not using it, then you should definitely use it.
All right. Then try to use the auto-generated captions on Somita. It comes when you are uploading the reel and when you are just about to post it. Then this feature is displayed. It says that let Facebook recommend your reel. So you just have to click it. You just have to like toggle. There's a toggle switch. You just have to click it. सिर्फ आपको on करना है उसको. Then try to use the auto generated captions on reels whenever you are posting your reels and you feel that because this is another accessibility function. It helps when someone is watching your reel and they're not using the audio. At least they can see the captions, they can see the captions on their screen. So try to use the auto generated captions if people have switched on their auto generated captions, or if they have switched on the captions from their settings, they will see the captions on their screen. So auto generated captions are very very helpful. I am not sure if if iPhone is giving out that option as of now or not, because I could not use that, or I could not get that option on. I think I got it, but Android is definitely giving it out because I tried it on Android and I got that on my Android, but I'm not sure if I'm getting it on my iPhone yet or not. But if you are getting that option of auto generated captions, please go ahead and use it. That is very very helpful. That is very very helpful. Okay, so I think this was your 13th point on Instagram. 13th or 12th point. I'm sorry, I forgot the count. Okay, anyways. So, yes, and last point that I wanted to discuss with you is that another thing that is working very, very well is that, when businesses incorporate funny and tasteful memes in their strategy. So, what you have to do is look out on Google or try to create your own funny memes with, and make sure it pertains to your business and they're in good taste. So humor also has humor also must be in taste when it goes out from your brand. So आपके brand की side से अगर जा रहा है, so it must be tasteful. ऐसा नहीं होना चाहिए कि it is derogatory या आप किसी को hurt कर रहे हो या a section of society और किसी के against में वो जा रहा हो, वो नहीं करना. But if you find something funny, if you find something which is hilarious, so कुछ ऐसा कुछ हंसी मजाक सा हो, कुछ funny सा हो, और वो आपको लगे that it is useful for me in promoting my business. So if you have a shop and if it is a service, you're providing some service, या आप कुछ shop, you're selling something and you find a meme that you can use, try to use that, because humor जो है that has more tendency to go viral and be noticed. So कहीं पे भी जो हंसी मजाक की बात होती है या फन कुछ होता है, बड़ी जल्दी वो नोटिस में आ जाता है. So try to use that, and this is because this is one of the updates, one of the ideas that I wanted to share with you all, that this strategy has been working well for a lot of businesses, bigger businesses as well. So they incorporate funny and tasteful memes in their strategy on Instagram. So marketing strategy में वो include करते हैं अपनी, and this works very well for them. Okay, so with this, I want to share with all of you that if you have shared this live in 5 groups and tagged 20 friends, you can just drop me a WhatsApp on 9999708215, and I'm going to send you a free guide on how to create never-ending social media content. So, guys, these were the updates that I wanted to share with all of you today. I am just trying to read certain comments now. I hope okay, so I'm just going through Instagram comments as of now. Okay, so we don't have any major comments on Instagram. Seems like some new chapter has been introduced and we're super excited to see and use it. Kavita ji is saying this. Try to post reels on reels one evening before any holiday. People watch it. Watch more reels. I'm trying to read Jagriti's comment. I did this and I've observed both views and likes were more. Yes. So see, guys, for most of the people, you have to understand it this way, that
मोस्ट पीपल एक्सेस देयर सोशल मीडिया लाइक यू आर डूइंग. सो आपके पास भी, अगर आप घर में काम कर रहे हो या आप ऑफिस में बिजी हो या आप काम कर रहे हो, तो आपके पास इतना लेजर टाइम नहीं होगा दैट यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू अ लॉट ऑफ पोस्ट एंड यू आर स्क्रॉलिंग थ्रू द पोस्ट एंड लाइकिंग देम एंड एवरीथिंग. सो ट्राई टू सी कि जो शेड्यूल है वो, अगर आप, of course you should keep experimenting, experiment आपको करते रहना चाहिए, and then only you should decide what is the best posting time for you. But जनरली आप ये देखो कि जब आपको लगता है कि या दिस इज काइंड ऑफ अ बिट ऑफ अ फ्री टाइम फॉर मी, कल छुट्टी है तो शायद मैं, या यू नो मेरे लिए फ्री टाइम है तो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ सोशल मीडिया, या मैं इस टाइम पे एक्सप्लोर कर रही हूँ सोशल मीडिया. सो पहला थॉट आप वो लेके चल सकते हो कि मैं, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से एक्सप्लोर, मैं इस टाइम पे एक्सप्लोर करती हूँ तो लोग इस टाइम पे एक्सप्लोर करते होंगे. लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज कि कब पोस्ट करना चाहिए. सो ये एक थॉट आप लेके चल सकते हो कि ये टाइम जो है वो कंपैरेटिवली फ्री होता है, तो हम इस टाइम पे एक्सप्लोर करते हैं तो बाकी लोग भी इस टाइम पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. रेखा जी इज आस्किंग व्हाट टू डू टू बी अ फेवरेट पोस्ट सेंडर. फेवरेट पोस्ट सेंडर का मतलब मैं नहीं समझ पाई रेखा जी. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन. इफ यू आर आस्किंग हाउ टू बी दी इन द फेवरेट लिस्ट, कि लोग आपको फेवरेट कैसे मार्क करें, उसका सिंपल आंसर यही है दैट try to post the content that most people like. आप एंगेजिंग पोस्ट डालिए, एंगेजिंग कंटेंट आइडियाज, आप ऐसे आइडियाज होने चाहिए कि लोग उसको, उससे लोग अप्रिशिएट करें उसको, उससे एंगेज करें. तो अगर उनको कंटेंट आपका अच्छा लगेगा, आपके पोस्ट अच्छे लगेंगे, तो वो आपको डेफिनेटली फेवरेट मार्क कर देंगे. ओके, so I think these were the comments, and I think this was my time. Thank you so much everybody for joining this live, and if you have shared this live in 5 groups and if you have tagged 20 friends, please don't forget to drop me a WhatsApp and get your free guide on how to create never ending content. Guys, I'm just going to take some time. If you have dropped your WhatsApp, I'm going to take some time to respond to your WhatsApp messages. Please allow me some time to reply to your WhatsApp messages. मैं सबको वो फ्री गाइड जरूर भेजूंगी. मुझे थोड़ा सा टाइम देना प्लीज. मुझे WhatsApp मैसेजेस जरूर जरूर ड्रॉप कर देना. Thank you so much. Thank you Sulekha ji. Thank you Swati. Thank you Shreya. Thank you Kavita ji. Thank you so much everybody. Bye bye everyone. Thanks Sonia.